whatever doubts, I'm pretty sure you must be Recording in knowing, progress. you must be knowing something And it's about been improvised as per the usage of the consumers, right? uh And we yeah, okay. Sorry for the So dismissal. yeah, no worries. So basically, I'm sure that you might be, having some, what you can say, knowledge or some awareness about BIM or Revit. But feel free to, ask questions about BIM, Revit, or whatever I'm going to, showcase you now. You are free to ask and come up with doubts, any questions if you have. I'll try my best to resolve it. Okay, so moving ahead, I'll just share my screen. Just a second. First, we'll be moving. I'll run you through a short PPT basically. I hope my screen is visible perfectly. Yes, it's visible, ma'am. Yeah, yeah. Okay. So as you all know, we are here to learn more about BIM and Revit. So we'll see like how BIM and Revit together are transforming the architectural and construction industry basically. So BIM and Revit together go hand in hand. It's more of creating a revolution in the AECO industry. So when I say AECO, it is architecture, engineering, construction, and operations. So we'll see how it goes. So myself, Neha, again, and we'll see first more about BIM, and then we'll move towards Revit. So anyone who knows what is BIM, except the what you can say the full form, but what actually BIM is, can anyone? I think you can unmute and maybe, or maybe you can put up in chat. So what is BIM? Anyone? Hello, Yeah. am I audible, ma'am? Yes. 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 Perfectly fine. We make we make building information modeling software Mm-hmm. है जो हेल्प करता है प्लानिंग लाइक बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर Mm-hmm. और इंटीरियर और एमईपी जिसमें Mm-hmm. आप ए टू जेड बिल्डिंग का मतलब डिटेल ड्राइंग कर सकते हैं जिसमें आपका Yes. शेड्यूलिंग सकता है हम्म. हाँ. सो बराबर हो आप. बिल्डिंग बट निकाल फिर सकते हैं अलग 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 चीजों को बना के एक जगह हम मर्ज भी कर सकते हैं जैसे हम एमईपी हुआ हमारा या इवन मिस्टर संजीव ने बोला है इट इज अ प्रोसेस. यस, करेक्ट. तो सो करके हम एक परफेक्ट जो हमारा कंबाइन होता है उसको पीआईएम के थ्रू ही करते हैं ओके. हाँ, सही है. जो भी लाइक आपने बताया सही है, बट उसमें और थोड़ा सा एडिशन है. सो बेसिकली करेक्ट. बिम इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है. बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग अगेन, जैसे आपने कहा कि एईसी इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन. ठीक है. अभी आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, हमारा खुद का घर अगर हम ले ले, तो उसमें 3 डिसिप्लिन होते हैं. ओके. सो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड एमईपी. ठीक है. जो आपका प्लम्बिंग, फिक्सचर्स, एसी लगा है, दैट ऑल कम्स इनटू एमईपी. स्ट्रक्चर में आपका मेन स्ट्रक्चर आएगा, जो भले हमको दिखता नहीं है बाहर से, बट उसके बेस पर हमारा बिल्डिंग बना है. एंड जो हमको दिख के आता है, दैट इज ऑल आर्किटेक्चर. मतलब आपके वॉल्स हो गए, डोर हो गया, विंडो हो गया, कुछ फिनिशिंग हो गया, फॉल्स सीलिंग हो गया. दिस ऑल इज आर्किटेक्चर. ठीक है. अभी इन तीनों डिसिप्लिन को साथ में लाना, ठीक है, ये काम बिम करेगा. एंड बिम इंटेलिजेंटली करेगा. वाई इंटेलिजेंटली? बिकॉज ये सब आपके साइट पे, जस्ट इमेजिन करना एक सिनेरियो कि वेयर यू हैव स्टार्टेड, यू हैव अपने साइट पे बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया. ठीक है.
ऑब्वियसली तीनों अलग अलग लोग आके वो बिल्डिंग्स बनाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे बट तीनों अपने आइडियाज वो बिल्डिंग में लगाएंगे। नाउ आपका जो एक बीम है या फिर डक्ट है या फिर एक कॉलम है, वो आपके वॉल को क्लैश कर रहा है। ठीक है, अभी ये बनने के बाद अगर समझता है तो ऑब्वियसली आपको एक तो वो दीवार तोड़नी पड़ेगी, थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी, या फिर वो कॉलम का कुछ करना पड़ेगा। बट यर इन बिम हम ये सब साइट पे होने से पहले करते हैं। ठीक है, सो एक डिजिटल प्रोटोटाइप बनाते हैं या डिजिटल मॉडल बनाते हैं, और उसमें सब जो भी जो भी कॉम्प्लिकेशन चैलेंजेस आ सकते हैं वो पहले ही रूल आउट कर देते हैं। ठीक है, सो इसके लिए बिम इज इंटेलिजेंट मॉडलिंग, वर्चुअल मॉडलिंग बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है उसके। नाउ आप लोग बोलोगे हम तो कैड में भी वो करते हैं, बट देर इज अ डिफरेंस जो हम देखेंगे। ठीक है, सो यस करेक्ट, बिम इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, एंड वो आपको मोर ऑफ जैसे मैंने कहा डिजिटल प्रोटोटाइप बनाता है आपके बिल्डिंग का। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हम, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो अभी जैसे कहा बिम तो हो गया। अगेन देर इज अ कंफ्यूजन इन टू द इंडस्ट्री कि बिम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिम इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, बिम इज अ प्रोसेस। जैसे एंड्रॉयड हुआ, ठीक है, एंड्रॉयड पे आपके एप्स रन हो रहे, ठीक है, तो एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म हुआ, वैसे बिम एक प्लेटफॉर्म हुआ जो जिसके बेस पर रेविट बना हुआ है। There are n number of softwares available in the market, but Revit is popular amongst them for the BIM industry. ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेविट? बिकॉज बिम करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर है हमारा रेविट। ओके, सो व्हाट रेविट डज, इंटेलिजेंट 3D मॉडल्स। आई विल इंटरप्ट हियर, जिसको भी जो भी क्वेश्चंस होगा आप चैट में लिख सकते हो, हम एट द एंड देखेंगे, बिकॉज अभी मैं ये जब प्रेजेंट करूँ तो मैं नहीं देख पाऊंगी आपके क्वेश्चंस, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम एट द एंड ऑफ द सेशन। बट आपको इन बिटवीन जो भी आता है आप चैट में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, सो इंटेलिजेंट 3D मॉडल्स, ठीक है, एज आई सेड इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि ये सब हम बिफोर हैंड कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी हम बनाएंगे वो एलिमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन वो मॉडल में होगा। सो इफ आई से अ वॉल, तो वॉल का मटेरियल हो गया, वॉल का थिकनेस हो गया, वॉल का लेंथ हो गया, वॉल का विड्थ हो गया, वॉल किस लेयर्स में बना है, उसमें ब्रिक वर्क कितना है, कंक्रीट कितना है, ये सब आपको आपके मॉडल में मिलने वाला है। देन सेकेंडली मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्चर, योर स्ट्रक्चर एंड योर MEPF, ये सब डिसिप्लिन्स एक साथ आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे और एक हमारा एक फाइनल मॉडल बिल्डिंग बनेगा। ठीक है, देन योर क्लैश डिटेक्शन एज इन, जैसे मैंने कहा वॉल के बीच में योर डक्ट इज क्लैशिंग, योर कॉलम इज क्लैशिंग, सो वो क्लैशेस हम बिफोर हैंड रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4D 5D इंटीग्रेशन, सो 3D सबको पता है, 3D राइट, जिसमें हाइट एक डिमेंशन होता है, वैसे ही हम हमारे मॉडल में 4D एंड 5D डिमेंशंस भी डाल सकते हैं। सो 4D इज मोर ऑफ टाइम, हम टाइम डाल सकते हैं कि हमारा बिल्डिंग क्या क्या स्टेजेस में बनेगा विद टाइम। एंड 5D इज कॉस्ट, तो एक जो बजट होगा, सब्सटैंशियल बजट, हम बिफोर हैंड पता कर सकते हैं कि मुझे इतना इतना ही बजट में मेरा घर बनेगा या फिर जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो बनेगा। एंड साइमल्टेनियसली हम वेस्टेज रोक सकते हैं मटेरियल्स का, एज वेल एज कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, जो भी वेस्टेज है वो हम बचा सकते हैं। ठीक है, विद प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया रुक गए कल परसों और करेंगे, नो, विद टाइम एंड कॉस्ट हम उसको बहुत एफिशिएंटली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे मोर ऑफ रेविट, सिंस बिम एक प्लेटफॉर्म है, हम बिम को जस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे यू नो व्हाट यू कैन से, हमारे टूल्स के साथ।
फॉर ईच एंड वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो विल बी यूजिंग रेविट। सो रेविट का पर्पस क्या है? इट इज मेजरली डिजाइंड विथ बिम टेक्नोलॉजी एंड किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो एसीओ इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ व्हाट, हम स्केच भी कर सकते हैं, बट क्या वो स्केच में हमको सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नो। हम कैड में ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, बट उससे हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नो। सो इन दैट वे रेविट गोज फॉर इंटेलिजेंट मॉडलिंग, जिसमें हम फ्रीली डिजाइन भी कर सकते हैं, फ्रीली हमारा मॉडल बना सकते हैं, एंड वो प्रोजेक्ट जिसको भी डिलीवर करना है, वो एंड ओनर हो या फिर बिल्डर हो, ठीक है, उनको डिलीवर जो कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। सो रेविट से हमको क्या क्या मिलेगा? ठीक है। सो फ्लोर्स एंड सीलिंग प्लान मेनली, योर एलिवेशंस हमको मिलेगा, सेक्शंस मिलते हैं, 3D व्यूज मिलते हैं, एरिया कैलकुलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज। सो जो हमारा व्हाट यू कैन से क्वांटिफिकेशन होता है, बीओक्यूज जिसको हम बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल्स, बिल्स ऑफ क्वांटिटीज, वो हमको रेविट के मॉडल से जनरेट होके मिल सकता है, अगेन बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशंस। तो हम रेविट भी देखने वाले हैं, बट जस्ट मैं एक पीपीटी थ्रू आपको रन कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया है, देन वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव वी कैन केटर देम इन द लास्ट, ठीक है। सो एज यू कैन सी, अगर एक मॉडल है तो हमको इसमें से क्या क्या मिल सकता है? एक मॉडल से एलिवेशन, सेक्शन व्यूज, देन सोलार स्टडी, प्लान व्यूज। अगेन हर चीज आपको नहीं करनी है, आपको एक प्लान बनाना है, बाकी सब जो भी व्यूज है वो साइमल्टेनियसली रेविट आपको जनरेट करके देगा। नाउ सम ऑफ द रेविट फीचर्स। सो पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज पैरामेट्रिक? से आपको एक एलिमेंट रिसाइज करना है या फिर एक आधा एलिमेंट स्वैप करना है। सो इफ यू टेक अ एग्जांपल ऑफ से जैसे इसमें ही है कि डोर का नॉब या फिर डोर का हैंडल हमको चेंज करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम डिलीट करके एक नया बनाएंगे, नो, नो नीड। आप उधर के उधर उसको स्वैप कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये डोर के बजाय मुझे कोई और डोर चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करूं, नया डोर ये करूं, नो, यू कैन डायरेक्टली स्वैप देयर देयर एंड देयर। टाइप सिलेक्टर एक आता है रेविट में, उधर से आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, ठीक है। सो पैरामेट्रिक मीन्स you can adjust the height, weight, size सब, as well as you can interchange, ठीक है। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जैसे अगर हम कैड में या कोई और सॉफ्टवेयर में करें, सो सपोज मैं एक, जैसे इस एग्जांपल में है, एक विंडो मैंने ऐड किया, ठीक है। तो एक विंडो अगर मैं ऐड या डिलीट करती हूँ, तो बाकी के व्यूज में भी वो साइमल्टेनियसली अपडेट होगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट गेटिंग अपडेटेड, मतलब वो मेरे लिए एक हेडेक होगा कि मैं हर एक व्यू में जाके उसको अपडेट करूं, और मान लो मैं एक व्यू में भूल गई, तो मेरा क्वांटिफिकेशन पे डायरेक्ट असर गिरता है, डायरेक्टली इट वुड अफेक्ट माय क्वांटिफाई द बीओक्यूज एंड बीओएम्स, राइट। तो ये अवॉइड करने के लिए Revit provides you a very good feature, that is bidirectional associativity, means a change anywhere is a change everywhere. Okay. So, can we, any questions? Yeah. Can others mute, please? Okay. So, wherever you change, एक व्यू में भी if I change something, वो हर एक व्यू में simultaneously अपडेट होगा. Okay. नेक्स्ट इज डिटेलिंग। नाउ हम प्रोजेक्ट तो बना देते हैं, राइट, बट अगर ये वेंडर्स को प्रोजेक्ट जाता है, नॉर्मल लेबर, बिकॉज हमने तो प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया, राइट, बट एंड मतलब जो एक्चुअल में करने वाले हैं, जो लेबरर्स है, राइट, उनको तो डिटेलिंग लगेगी, वो ऐसे देख के तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो डिटेलिंग भी आप आपके रेविट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर सकते हो फॉर वेंडर्स। ये सब शीट्स में सबमिट होता है, लाइक ऑन पेपर्स। तो ये डिटेलिंग भी आप इसी सॉफ्टवेयर में करके उनको दे सकते हो। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आप अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो अगेन कॉस्ट बढ़ती है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है। बट जब आप ये बॉइल डाउन करते हो एक ही सॉफ्टवेयर पे, इट बिकम्स इजी
for you to maintain certain things. So everything can be done in one and one software. Okay, so डिटेलिंग भी हम कर सकते हैं एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. ओके, schedules and quantities. So BOQs जैसे how many bricks I have used in my wall, या फिर फ्लोर स्केड्यूल, डोर स्केड्यूल, कितने विंडोज यूज हुए, किस टाइप के यूज हुए, उनका लेंथ क्या है, कॉस्ट क्या है, काउंट क्या है. ऑल द थिंग्स आई कैन काउंट थ्रू माई schedules and quantities within Revit. बिल्ट इन लाइब्रेरीज, या बिकॉज थोड़ा एनहांस करने के लिए प्रोजेक्ट, थोड़ा सा उसको एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए, you need to use certain elements in your project. So there are built-in libraries within Revit which you can use to enhance your project. थोड़ा और डिटेल लेवल पे बनाने के लिए आप उनको यूज कर सकते हो. सो फर्नीचर आ गया, प्लांटेशन आ गया, देन टाइटल ब्लॉक्स आ गया, एवरीथिंग यू कैन यूज फ्रॉम Revit itself. विजुअलाइजेशन फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली जो कस्टमर है, जो वेंडर्स है, जो ओनर्स है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू द विजुअलाइजेशन, राइट? बिकॉज एनीथिंग, हम भी कुछ बाहर लेने गए, वी जनरली लुक एट द लुक एंड फील, हम देखते हैं, देन ओनली वी बाय सर्टेन थिंग, राइट? तो वैसे ही विजुअलाइजेशन, वंस योर प्रोजेक्ट इज रेडी, हाउ टू एनहांस इट, हाउ टू प्रेजेंट इट, तो विजुअलाइजेशन भी, रेंडरिंग्स भी आप रेविट थ्रू कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द रेंडर्स टेकन फ्रॉम रेविट इटसेल्फ. yes, there are certain settings which you need to do, but you can create beautiful renderings out of Revit itself. So day view, then your bird eye view, so these are the furnitures which you can use through Revit and create compelling renderings. Okay, नाइट व्यू, सो यू, अगर आपको लाइट इफेक्ट्स दिखाने हैं तो नाइट व्यू भी आप रेंडर कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो इवन इफ यू वांट टू यूज लाइट्स एज वेल एज आपको बाहर का लाइटिंग भी यूज करना है, दैट ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड थ्रू रेविट इटसेल्फ. सो ये भी रेविट का, प्योर रेविट का रेंडरिंग है. ओके, सोलार स्टडी. नाउ व्हाई सोलार स्टडी? सो सोलार स्टडी से आपको, लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लोकेशन से यू नीड टू डू अ एनालिसिस ऑफ कितना सनलाइट आ रहा है, हाउ मच लाइट आई वुड बी रिक्वायरिंग. नाउ देर इज ट्रेंड चल रहा है ग्रीन बिल्डिंग्स का. सो ग्रीन बिल्डिंग्स मीन्स व्हाट? सॉरी, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, जहाँ पे सस्टेनेबल मटेरियल है, वी आर रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूजेज, वी आर रिड्यूसिंग आर्टिफिशियल यूजेज, हम कम कर रहे हैं बेसिकली. सो सेम वे, अगर मुझे सनलाइट प्रॉपर यूटिलाइज करना है, आई कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर्टिफिशियल लाइक इलेक्ट्रिसिटी. सो उस चीजों के लिए सोलार स्टडी यूज होता है. देन हाउ योर मटीरियल्स रिएक्ट टू सनलाइट, सो इन सब के लिए सोलार स्टडी हम करके we can decide on the materials, we can decide on lighting fixtures, कितने lights लगेंगे. All this can be done through solar study. Okay, so this is all about Revit. And what importantly, तो BIM क्या है? BIM is poised to be a major innovation. So BIM is into the industry from many years, but it is getting popular धीरे धीरे. Okay, there are many resistant people who don't want to get into BIM and Revit, but believe me, बहुत आगे नहीं जा पाएंगे अगर BIM and Revit को इजीली अगर हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया तो. बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स अडेप्टिंग BIM and Revit, ताकि सस्टेनेबल हम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कर पाए. इवन मेट्रोज का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑल इज गोइंग ऑन, मतलब मेजोरिटी of the projects are going through Revit and BIM. So yes, it is a major innovation and supplying oxygen, I would say, to the AECO industry. Okay, and there are again number of softwares into the market, but Revit is क्या बोलते हैं, popularly used because it is easy, having easy user interface, and बहुत लोग यूज भी करते हैं, तो इसके लिए it becomes easy. Okay, so moving forward, now
what are the benefits? I guess I have told you majority of the benefits, but clubbing them down. So automated documentation. So first, जैसे मैंने कहा, you create. I'll be showing you in proper Revit software also, but just before going into the software, sorry, automated documentation. So if you create one plan view, you are simultaneously getting your elevations views, your section views, your 3D views, right? So ये सब views आपको simultaneously मिल रहे throughout the project. You are not creating a section view also. You are getting it directly from Revit. Okay. So that is one of the benefit. Secondly, enhanced visualization. You can हैव अ लुक एंड फील ऑफ द प्रोजेक्ट. आपको ऐसे इमेजिन नहीं करते बैठना, आप डायरेक्टली देख सकते हो, राइट? सो एनहांस्ड विजुअलाइजेशन, यू कैन go through the 3D renderings, you can do walkthroughs, you can offer AR VR even to your clients through Revit and BIM. So it becomes easy to visualize the project. जो ओनर रहेगा उसके लिए भी, या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके लिए भी. ओके. देन इम्प्रूव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन. यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, एक ही बंदा नेवर डज अ एंटायर प्रोजेक्ट, राइट? सो वो कोलैबोरेशन इज ऑल्सो रेडी, इज वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, राइट? सो सब लोगों को इकट्ठा लाना, उनमें कोलैबोरेशन करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट रिड्यूसेस रीवर्क, कि मैंने आज ये डिसाइड किया बट सामने वाले को पता ही नहीं है, ही इज गोइंग ऑन डूइंग हिज वर्क. So that creates, a gap between delivery of the project as well. So that is avoided through BIM. All are on the same page, doing the same thing in a better way. Okay. सस्टेनेबल डिजाइन सपोर्ट. यस, मूविंग टूवर्ड सोलर स्टडी हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, इको फ्रेंडली मटेरियल्स हो गया. सो ऑल दिस कैन बी डन थ्रू रेविट इटसेल्फ, राइट? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, अभी सीख रहे हैं बट व्हाट बेनिफिशियल कैसे है मेरे लिए, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली विल बी लुकिंग टूवर्ड्स आवर करियर इनटू बिम एंड रेविट, राइट? So career opportunities in Revit are very much high into the industry. Yes, it is going slow, but it is in the Indian industry as well as abroad industries as well. So there is BIM adoption in India. Sector is expanding rapidly. Not reached 100% definitely, but it is, believe me, government से आ रहा है तो everyone has to adopt it. Then average annual salary range is, if you start, it starts from 3.5. And as you have expertise within yourself, you do certain projects, you have expertise, you are not a fresher, you can raise it efficiently. Okay. Key roles and industries. So roles, how can you start? You can start as application engineer, you can start as Revit drafter, you can start as BIM coordinator. So even when I came into this industry, I started as application engineer, okay, wherein I used to give Revit demos and everything. But right now I'm within the project. I mean, I'm doing projects as well as I'm doing trainings as well. So corporate trainer you can be, you can do freelancing as well, okay, and where you can do this all within AECO industry. So whatever जिसमें आप स्पेशलाइज करते हो, आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग, देन MEPF है तो MEPF, एंड ऑपरेशंस हुआ तो ऑपरेशंस, राइट? So top 10 industries for BIM architecture careers, as I said, architecture and urban planning, real estate, very much, facility management. So facility management is majorly about operations maintenance. बिल्डिंग तो बन गया, आपने बिल्डिंग हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद क्या, उसका भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, हाउ बिल्डिंग इज परफॉर्मिंग, क्या दिक्कत आ रही है. सो फैसिलिटी मैनेजमेंट इज मोर अबाउट दैट. हेल्थ केयर, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए. Design and sustainability, eco-friendly, green buildings, right? Infrastructure, as I said, metro projects हो गए, railway projects हो गए, bridges हो गए, infrastructure. Engineering consulting,
सो इंजीनियरिंग जो फर्म्स है उनको डिजाइन करना, एनालाइज करना फर्स्ट, वो भी आप इंजीनियरिंग कंसल्टिंग थ्रू कर सकते हो. सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एज आई सेड, रेलवेज, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, सो स्कूल्स हो गए एंड कॉलेजेस हो गए, राइट. इवन योर what you can say, this hostels, right. गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, सो गवर्नमेंट में अगेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, एज वेल एज पब्लिक वर्क्स बेसिकली, राइट. गवर्नमेंट buildings and all those things. Even very much popular right now is the व्हाट यू से स्कैन टू बिम. सो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, अभी ऑब्वियसली वो तो बना के चले गए लोग, उनका कोई ड्राइंग्स हमारे पास नहीं है, राइट. सो इन दैट केस ऑल्सो उनका रिपेयरिंग करना है. ऑब्वियसली उनको तोड़ के तो करेंगे नहीं, बिकॉज दोज आर अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स, राइट. तो उनको भी हम स्कैन टू बिम थ्रू रेविट में बना के वहां वहां हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं. So that is also one of the industries which is booming right now within BIM. Okay. Then next is how to build a career. Career opportunities तो देख ली हमने, but how to build it, how to start it, right? So first is gaining education, right? BIM के बारे में तो सीखना ही है, but BIM पे बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हमको सीखने जरूरी है, राइट. सो परस्यूइंग डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस विद इन दी आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, राइट. सेकेंड इज प्रोफिशिएंसी एंड प्रोजेक्ट्स. टूल सीख लिए बट यूज ही नहीं किए, नॉट ऑफ यूज, राइट. सो फर्स्ट लर्निंग एंड देन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स, राइट. सर्टिफिकेशंस लेना, ओके. थर्ड इज पोर्टफोलियो डेवलपमेंट. प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उनका पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी है, ताकि यू कैन प्रेजेंट इट टू समवन. सी, इफ यू गो एंड जस्ट से मुझे आता है रेविट, डजंट मेक एनी सेंस. यू हैव टू शो समथिंग टू समवन टू मेक हिम बिलीव कि यस यू नो, राइट. रेविट बोलो या विच एवर सॉफ्टवेयर या विच एवर वर्क यू आर डूइंग, राइट. सो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली इंडस्ट्री नेटवर्किंग. लिंक्डइन है, अगेन देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, बिम के काफी ग्रुप्स है. सो एंगेजिंग इनटू देम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवेंट्स हो गए, फोरम्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, राइट. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस क्या क्या आप ले सकते हो, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, देन यू कैन मूव टूवर्ड्स ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशंस. बिम स्टैंडर्ड्स जो ISO 19650 है, उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना इन योर प्रोजेक्ट्स. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लाइक रेविट तो सीख लिया, बट देर आर मेनी अदर मोर लिंक्ड सॉफ्टवेयर, जैसे डायनामो हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस हो गए. दैट टू यू कैन learn once you go through a basic training, right. And opportunities, so exploring freelancing and entrepreneurship in BIM consulting. So even अगर आपने सीख लिया but you are not ready to work for someone, you can do freelancing as well, right. There are many opportunities available for freelancers as well. So in between I had also I was also doing freelancing. So there are n number of opportunities if you start with it. Start करना जरूरी है. Once you get into it, you have multiple options with you. So we'll run through a short project also, but this was a small project created. So इसमें क्या था, एक 3-story residential building है, architecture and MEP किया था. So detailed walls, plumbing systems. So इसमें से क्या, what I have created a short summary basically. तो इसमें 15 clash detection हमने किया था. 15 clashes आए थे जो रेविट में हमने रिकॉग्नाइज किए, एंड देन वी रिजॉल्व्ड इन रेविट इटसेल्फ. एंड ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट. सो कैड में जाने के बजाय हमने रेविट थ्रू ही शीट्स, टाइटल ब्लॉक सब बना के सबमिट किए थे, इवन द क्वांटिटी टेक ऑफ्स. ओके. सो इसमें से व्हाट वर द बेनिफिट्स. सो व्हेनेवर एक फर्म भी अगर सीखता है ना, फर्स्ट इट डज अ पायलट प्रोजेक्ट टू सी कि मुझे सही में बेनिफिशियल है या नहीं. So what were the benefits through it? 40%
फास्टर डिजाइन कोऑर्डिनेशन हुआ कि अगर मैं आर्किटेक्चर करूँ फिर स्ट्रक्चर वाले के लिए रुकी रहूं, ऐसे नहीं। साइमल्टेनियसली तीनों डिसिप्लिन्स के हमारे कोऑर्डिनेशंस हुए थे, सेविंग 40% ऑफ द टाइम। 12% लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज मटेरियल्स का, मटेरियल्स लेना जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज अबाउट एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, तो मुझे पता होना चाहिए ना मुझे मटेरियल्स कब लेना है। अगर पहले लूं तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे कुछ दिनों के लिए, लेट लूं तो मेरा प्रोजेक्ट हैम्पर करता है प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट। सो आई शुड नो एग्जैक्ट टाइमिंग्स व्हेन टू परचेज द मटेरियल, राइट? तो वो आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हो। एनहांस क्लाइंट अप्रूवल्स, विजुअलाइजेशन से ऑब्वियसली क्लाइंट्स वर इम्प्रेस्ड, सो एन एनहांस्ड अप्रूवल्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड स्मूथ हैंडओवर। बहुत दिक्कतें नहीं आती है बीच में फॉर द हैंड ओवर टू द ओनर, बिकॉज एवरीथिंग इज रेडी इन प्लेस। आपको बोलना नहीं पड़ता है किसी को कि नहीं अभी तक ये हुआ नहीं है। वंस यू आर इन द प्रोसेस एवरीथिंग गोज टाइम बाय टाइम एज डिसाइडेड, राइट? सो जो भी इंटीग्रेटेड बिम डेटा था हैंड ओवर था, वो करेक्टली फॉर द फैसिलिटी मैनेजमेंट टू बी इम्प्रोवाइज्ड करेक्टली हुआ, राइट? What were the lessons learned and best practices? So early BIM planning, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आधा आपने कर दिया एंड देन यू डिसाइड सडनली कि नहीं अभी मुझे BIM लाना है। यस दैट इज पॉसिबल, बट बेटर अगर आप पहले से वो डिसाइड करो कि हमको किस फ्लो में जाना है, राइट? हमको BIM अडॉप्ट करके ही जाना है तो वेल एंड गुड, राइट? नहीं तो फिर जब दिक्कतें आएंगी तब देखेंगे, ऐसा एटीट्यूड रख के मतलब नहीं है। Secondly, regular coordination. So yes, there are time frames set, time in between set where you do the regular coordination. ताकि if I do a week का अगर मैं वर्क कंप्लीट करूं एंड देन आई डू दी कोऑर्डिनेशन थिंग, सो जो भी क्लैशेस मुझे बाद में आने वाले हैं वो आज के डेट में ही आ जाएंगे। आई कैन रिजॉल्व देम एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। ऐसे नहीं करना है कि सब करके ही मुझे फिर क्लैश डिटेक्शन करना है। नो, देन यू विल गेट 50 क्लैशेस राइट टुगेदर। उनको रिजॉल्व करना बिकम्स मोर हार्ड वर्क। So better you have 15 days या 7 days का meeting where you decide, you run a clash detection test and जो भी clashes आते हैं उसको resolve करो and then move ahead, right? Organize templates. Again, there are certain standards which you need to set for your project, right? So that is called template building. That can be done through Revit itself, maintaining organized, well-disciplined templates and then following it throughout your projects. And leverage automation. So the work which I need to do again and again, right? Repeated जो repetitive work है, वो हम कम कर सकते हैं through use of plugins and tools which are available in the market for free for trial as well. You can use them in your project and save your time, your cost, and your hard work also. Right? So these were the lessons we learned from that project, which we did as a pilot project. And then moving ahead, we can improvise at any stage. Yes, but getting into it, diving into it is the most important part. Okay. So before we move to the software part, any questions you have? I'll just try to go to the chat maybe. Yeah, it is a process. Yes, because there are many people, right, who are, I mean, for terminologies, I'll be using English definitely, but where it becomes easy for people to understand, I'll be using Hindi. Okay. Which one is the best software for rendering in Revit? So Revit 24, with Revit 24, they have introduced Twinmotion, which is best. Again, Twinmotion, like I have also learned from, I guess, 2 years now. So Twinmotion is best for rendering. If not Twinmotion, if you're not comfortable with that, Enscape is there, Lumion is there. V-Ray becomes a bit, thoda sa not user friendly, but yes, Lumion, Twinmotion, Enscape are best for rendering.
D5 I haven't heard about, but Lumion is the best, and even Twinmotion is the best. Any questions? Anyone who wants to ask question can drop in the chat, or even they are free to unmute and ask. Okay, I'll हेलो yes, मैम, ऑडिबल? yeah. और मैम, मुझे ये जानना था कि ये जो कोर्स अभी आपने बताया बीआईएम के बारे में, Mm-hmm. बेसिकली आप फुल बीआईएम का क्लास होगा या फिर केवल एक पर्टिकुलर पार्ट सब्जेक्ट जैसे कि आर्किटेक्चर, आरसीसी, शेड्यूलिंग, या फिर किस टाइप? So हाँ, सो बेसिकली फर्स्ट बिम से स्टार्ट होगा। ओके। बिम के भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ प्रोसेस है जो हमको समझना पड़ता है फर्स्ट बिफोर मूविंग टू द टूल, एंड देन वो फॉलो होगा रेविट के साथ, जिसमें अगेन अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है तो मॉड्यूल्स हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे जो फ्लो है लाइक उसमें सभी आएगा, स्केड्यूलिंग आएगा, मटेरियल एप्लीकेशन आएगा, डिजाइनिंग आएगा, तो सब अगेन डिफरेंट ये है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपीएफ। तो यू कैन डिसाइड आपको किसके थ्रू जाना है, मतलब कौन से डिसिप्लिन में जाना है। मेजर जो रेविट का क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट है तीनों के लिए, वो तो होगा ही फॉलो, बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करना है, जैसे आपको स्ट्रक्चर लेना है, देन वो एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर स्ट्रक्चर एज वेल। बट ओके मैम। बिम से स्टार्ट होगा एंड देन हम लोग रेविट पे आएंगे। मैम, एक्चुअली मुझे 5 ईयर एक्सपीरियंस है एज ए सिविल ओके। इंजीनियर, ओके। एजुकेशन एजुकेशन एंड प्लानिंग में। ऑलरेडी हम्म। प्लानिंग में थोड़ा बहुत करता हूँ साइट का। हम्म। तो हम्म। उसी के हिसाब से मुझे मतलब ऐसा कुछ कैरियर बताइए जिससे मतलब मैं और ग्रोथ कर सकूं। सो इवन सिविल में भी जैसे मैंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका जैसे द इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो भी आप सिविल में कर सकते हो, जिसको रेविट अगेन रिक्वायर्ड है। तो सिविल में जाने के लिए भी रेविट से स्टार्ट करके यू कैन गो टू सिविल 3D भी लर्न कर सकते हो, एंड सिविल 3D से भी आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ओके। या is AI going to bring to, I mean, till date, till today, no one is going through AI for creating buildings and all right now. There are certain plugins which are available, but I have tried using those also, but believe me, they are not giving you. See, if it's a small project, okay, you can use it. But when it comes to a project or infrastructure project, obviously no, AI is not getting into it right now. But there is intervention of AI, but not एज एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो इजी कर जाएगा काम। ट्रस्ट मी, नथिंग लाइक दैट। उधर अभी भी सॉफ्टवेयर आर स्टिल अलाइव, एंड यू नीड टू यूज सॉफ्टवेयर टू फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। And real estate is not going to boil down but boil up only. So obviously multiple projects are going to come, infrastructure projects आएंगे जिनके लिए ये यूज होना इम्परेटिव है, तो यूज होगा ही। BIM is 6D. So I won't say BIM is 6D, but BIM can collaborate with 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. So 4D, 5D I explained. It's more of cost and time. 6D comes with sustainability, so green buildings and what I explained. And 7D is for facility management, which again handover के बाद हमको कैसे manage करना है एक building को, that comes into 7D. So
you can incorporate those into your project with the help of BIM. What is the period of learning? So it again depends on what module you choose. And I guess Sonali ma'am would be more appropriate to answer this. AI will replace BIM industry, not yet and not expected. It would replace, it would contribute in improvising, but it won't replace. Plugins, there are multiple plugins available in Revit. Depends आपको क्या use करना है. You need to have a search about it, and then you can move ahead with what needs to be used. I'll just a second. I'll move to Revit right now. I hope my screen is visible. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So this is the Revit software basically, how it looks. Again, Revit is, I guess, what I had learned was, I guess, Revit 8 something, 8 version, 2008 version. Right now, currently it is 2026 version currently going on. This is 24 version. Okay. So with the upcoming versions, there are certain, what you can say, certain upgradations, not major, but yes, there are certain upgradations done into the software by Autodesk. So this is the 2024 version, as I said. This is how Revit looks like when you open. So this is one of the project I want to showcase. This is a sample project basically. So as I said, whatever you see on the start page is generated through Revit, nothing else used here. So I can first show you the project maybe. So this is the project. Okay. So this is not the, I mean, final what you see. So if you want to see the final, I'll just turn realistic here. So basically we don't work in realistic because, it makes your system a bit lag basically, because it uses your RAM, CPU, everything. So this is what it looks like. Okay, the trees, person, furniture, lightings, everything. Okay, I'll turn it to shaded. So in case my computer, crashes in between. So to avoid that. So yeah, ये level 1, level 2 है इसमें. So 2 levels only, right? So let's come to level 1 first, right? So this is a simple, kitchen dining hai, hall hai. There are this bathroom, utility area, laundries, and living room, right? So this is what your level 1 looks like. Now you can create a room legend as well, so that अभी जैसे अगर ये कुछ नहीं हो तो मुझे पता भी नहीं चले कि where what rooms are there, right? So you can create a room legend which shows like जैसे हम मैप्स में की बनाते थे कि दिस इज यहाँ ये क्रॉप ग्रो होता है, वहां वो क्रॉप ग्रो होता है, राइट? सो सामने वाले को समझे कि ये कलर डिनोट्स दिस. So same way we can create this for the layman to understand कि yeah, this is this, right? So bathroom, if I say I have this color, hall if I say I have this color, so it becomes easy to recognize. Again, grids with सब आप कर सकते हो इधर. You can have elevations. So if I come to elevations, right, you can have elevations here कि elevation से कैसे दिखेगा, right? Okay. Then section views, as I said. ठीक है, अभी हमको सेक्शन कैसे करना है, आई जस्ट शो यू. अगर ये मेरा क्रिएटेड है, राइट, बस सेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करनी है. सो से इधर तो है, बट लेट्स क्रिएट वन ईयर. ठीक है, एंड जस्ट गो टू व्यू करो, यूल गेट द सेक्शन, राइट? आपको सेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, यूल गेट अ सेक्शन, राइट?
देन 3D व्यूज, हम हमारे 3D व्यूज बना सकते हैं, राइट, हाउ इट लुक्स फ्रॉम यार्ड, लिविंग रूम का पर्टिकुलर चाहिए तो, किचन का पर्टिकुलर चाहिए तो, इट्स टेकिंग टाइम बट या, राइट, ओके. Then elevations I showed you, detailed views, what we saw right now. So wall का अगर typical floor wall का connection कैसे हो रहा है, so detail view you have. वॉल रूफ का कनेक्शन, इंसुलेशन सब यूज होता है. सो आर्किटेक्चर में हमको सिर्फ बाहर की चीज दिखाई देती है, ये सब इंटरनल चीजें हैं. तो ये भी तो हमको एक्चुअल बिल्डिंग में वी नीड टू हैव दिस, राइट. तो ये कौन करने वाला है, योर एंड लेबरर्स. उनको रेविट नहीं समझ आएगा, उनको ये ड्राइंग समझ आएगी. तो दीज ड्राइंग्स कैन बी डन थ्रू रेविट एंड ये हम उनको दे सकते हैं फॉर मेकिंग देयर वर्क इजी, राइट. बट ये हमको करनी पड़ेगी. तो इसके लिए वी नीड टू लर्न द सॉफ्टवेयर टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन सबमिटेड फॉर द प्रोजेक्ट डिलीवरी, राइट. सो ये स्टेयर्स का सेक्शन, स्टेयर्स का डिटेलिंग, हाउ द स्टेयर्स आर गोइंग, व्हाट्स द रेलिंग एंड एवरीथिंग. देन रेंडरिंग्स, किचन व्यू, लिविंग रूम, लाइटिंग्स, लाइटिंग्स भी आप डाल सकते हो, सेक्शंस. So schedules and quantities. Let's create a schedule quantity, right? So जैसे BOQs है, every time से BOQs are most important because see, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, what matters to you is the time and cost, right? जो प्रोजेक्ट ओनर है और जो प्रोजेक्ट करने वाला है या जिसको प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला है, राइट, ओनर एंड प्रोजेक्ट का बिल्डर, इनको बस दो चीजों से लेना देना है, टाइम एंड कॉस्ट, राइट. सो ये हम किससे निकाल सकते हैं, schedules and quantities से. Therefore schedules and quantities are most important. I don't say other things are not important, but ultimately जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बाद आपका schedules and quantities जो आता है, those are the most important things, right. So वो कैसे हम जनरेट करते हैं. So I'll just come to schedule and quantities. I'll say new. Okay. So say मुझे I want door का schedule से. So I just click here. Okay. Now whatever I want. So what I want is say family and type maybe. कैसे डोर यूज हुआ है, फिनिश क्या है, फायर रेटिंग क्या है, हेड हाइट क्या है, वट एवर यू फील लाइक, राइट. लेवल कौन से लेवल पे यूज हुआ है, फाइन. विड्थ क्या है मे बी, वट एवर. कॉस्ट एंड कम, फाइन. ओके, यू गेट. नाउ जो ब्लैंक दिख रहा है, यू वुड से इधर तो कॉस्ट ब्लैंक है, फायर रेटिंग ब्लैंक है, फिनिश बैंक ब्लैंक है, राइट. अगर आपको मेरा स्लाइड याद आ रहा होगा, आई हैड सेड बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशंस, रेविट इज गोइंग टू गिव यू नो डाउट, बट यू नीड टू फिल इट समथिंग इन दैट. खुद के मन से तो इट वोंट गिव यू बिकॉज वो तो रॉन्ग हो जाएगा, खुद के मन से देने लगू तो, राइट. तो what you need to do is आपको एक बार तो कुछ डालना है, राइट. सो सपोज दिस डोर इज से 2000. ओके, नाउ दिस विल बी अप्लाइड जिधर जिधर है. अब मुझे करने की जरूरत नहीं, नाउ इट नोज दिस डोर इज ऑफ 2000, सो इट विल अपडेटेड अकॉर्डिंगली, राइट. सो बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशंस जो जो वो ले सका थ्रू द प्रोजेक्ट इट टुक, बट जो आपने दिया ही नहीं है रेविट को, वो कैसे खुद के मन से नहीं ले पाएगा. सो यू हैव टू स्पेसिफाई. आप एक जगह स्पेसिफाई कर दो, बाकी इट विल डू इट ऑन इट सेल्फ. इवन स्टेयर केस 1 से लेकर लेवल 2 तक जाना है, इट विल डू द कैलकुलेशंस कि इतने स्टेप्स, आपको सिर्फ नंबर देना है, 21 स्टेप्स मुझे चाहिए. बाकी का जो डिवाइड करना है दैट इट विल डू ऑन इट्स ओन. ओके. सो Hello, इफ आई से yes, yes. I'd just like to inform that in another 5 more minutes we'll have to close the session. So Yeah, according yeah, yeah. Yeah, this is almost the end part.
I'll just take 2 more minutes, and then if anyone has certain questions, we can just have them answered. Okay. So what I told was just need to update once, it will update it accordingly. Okay. So that is more about what Revit is. And final जो आपके जो submission होता है, that is all on the sheets. So these are certain sheets, right? So plan views कैसे है? You just need to place the views on your sheet. This is your final submission. ठीक है? So yeah, all this is done in Revit. कुछ बाहर से नहीं लाया गया है. So yeah, any questions? Period of learning, as I said, it depends on the what you can say, the module you take first of all, and the levels you take, basic, intermediate, advanced, whatever, it depends on that course. So once you freeze on that, we can give you better information about the period for learning. But uh, like you can say approx it would be say 1 month or 1.5 or 3 months, as whatever module you select. Quantity takeoff depends on the element joined to one another or not. Not necessarily. Wall है तो वो wall किससे joint है doesn't matters. It element matters. Wall है तो wall का quantification, door है तो door का quantification. So element matters. Of disappearing of some parts of my project, shaded to realistic. What is the solution? I am using Revit 2025. Mm, maybe graphics issue is there. You can for who has Raj, Mr. Raj. So you can disable the hardware acceleration. Maybe that could help, because realistic view consumes more of your CPU and RAM. So that could be the issue. You can just try turning off your hardware acceleration. That could help. While learning with you, ma'am, how can I practice on software? Because you can have your trial version installed for Revit, which lasts for 30 days, and you can practice there. The team will, and even as Sonali ma'am has informed, you can they can help you with the software installation. Yeah. Yes. So yeah, I guess more 3 minutes we have. So any questions, I am here to answer them. I guess all know more about Revit, and there's no question, I believe. But yeah, I liked it. People were interactive, and I hope I gave you a chance to come up with your doubts. How can we switch to Revit structure? So Revit has all the disciplines here only. You don't have a specific Revit architecture or Revit structure. You can directly come here to this tab, which will give you structural elements to work with. And for MEPF, you can come to, even steel goes with structure, precast goes with structure. Systems is all about MEP. Right now I'm in sheets, that's why I'm unable to, but yeah. So structure is all about structure, steel is all about again structure, precast is about structure, and systems is for MEP. So if you want to switch to Revit structure, this is the tab. Thank you, Mr. Raj. Thank you for the appreciation. It motivates us. Yeah. Yeah. So I think I solved certain of your doubts. I hope I gave you a better understanding of what you had previously. So yeah, thank you all for your time. Saturday weekend vibes we have, and you spent your time here.
to know more about what you are interested in. So thank you a lot. Have a great weekend, I would say. Yeah. And I hope you get into BIM, BIM and Revit. I'm more passionate about BIM and Revit. So I like people, coming into this industry and contributing here. So yeah, all the very best. I hope the people who have joined here, create a good career into BIM and Revit. Yeah. All the best to you all, whatever you do like. But yeah, all the best and thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and the insights you have shared on BIM and Revit. I'm sure everyone present here has got an incredible learning today. Thank you so much again, ma'am, and thank you to all the learners who have joined in this session. We can close the session here, ma'am. Thank you so Yeah, much. yeah. Thank you. Thank you.